Okay, welcome children to the second video online class. Today it is about class 10 and the poem name is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. In this poem we will going to learn about the life of a tiger who has been in the zoo and how his life is different from the zoo and in the forest. So I have already written so that you cannot get confused. This poem compares the life of a tiger when he was in the zoo or when he was in the forest. So we will go to compare his life. So for your convenience, I have written the first stanza, second stanza, third stanza, fourth stanza, and fifth stanza. Each stanza talks about the different places. So for your convenience, I have written that which place, which stanza is talking about. So first stanza talks about when the tiger is in the zoo or he is in the cage. The first line says he stalks in his vivid stripes. Stalks means to walk. So when who is he here? Tiger. So tiger walks in his vivid stripes. You might have seen a tiger. He has a different stripes on his body. So this stripes in the first line it is talking about these stripes. So tiger is walking in the cage and he has different stripes on his body. Second line says the few steps of his cage. So where he is walking? He is walking in the cage. The first stanza talks about the cage. On pad of velvet quiet. You might have seen the paws. Paws मतलब होते हैं पंजा. So you might have seen the paws of the tiger. So the paws of the tigers are very soft because it has a paddy layer. So because of that paddy layer, in this line, the paddy layer of the paws has been compared with the velvet. So when the tiger walks, so his paws, gives no sound. It is very quiet. He walks very quietly. Okay, in the cage. In his quiet rage. Rage here means he is angry. Because tiger is in the cage, so he is walking in the cage here and there, in anger. So this is the first stanza. Stalks means walk, vivid means different, stripes means the different stripes on the body. The few steps of his cage on the pad of velvet quiet. Velvet quiet again I am making you to understand that his paws is paddy and because of that paddy paws the velvet quiet is written. In his quiet rage. So he is very silently angry. Now we move to the second stanza. Now this stanza talks about the forest. When the same tiger, if he would have not been in the cage right now, if he would have been in the forest, अगर tiger इस समय जू में न होता और अगर वो forest में होता तो वो क्या कर रहा होता? तो he should be lurking in the shadow. Lurking का मतलब होता है छुप जाना, to hide. So he must be lurking in the shadow. अगर वो जंगल में होता तो शायद इस समय कहीं shadow में छुपा होता. He might be hiding in the shadow. Sliding through the long grass, or might be he may be walking in the long grass. The forest has long grasses, so he might be hiding in the long grass. वो कहीं बड़ी-बड़ी घासों में छुपा बैठा होता. Near the water hole, where near the water hole means near the pond. There is a pond in the forest, तो उसी near the pond he might have hiding himself near the grass. So why he should be hiding himself near the grass? Because where the plump deer pass, वो अपने आप को पानी या किसी तालाब के बगल में बड़ी सी घासों में छुपा के इसलिए बैठा होता क्योंकि वहीं पे प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब मोटा हिरन पानी पीने आता है. तो जब वो पानी पीने आता तो what the tiger could have done? He could have attacked the deer and he would have killed. So अगर वो फॉरेस्ट में होता तो शायद ये काम कर रहा होता, but he is in the cage. Now third stanza again talks about the forest. कि अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो फिर क्या कर रहा होता? He should be snarling around the houses. जो छोटे मोटे एक दो घर फॉरेस्ट में बने होते हैं वहां जाके दहाड़ रहा होता. इसमें आर साइलेंट होता है तो स्नार्लिंग बोलते हैं. स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, तो वो गुर्रा रहा होता. At the jungle's edge, जो जंगल के किनारे किनारे घर बने हुए हैं वहां पे जाके वो चिल्ला रहा होता, ठीक दहाड़ रहा होता. Baring his white fangs and paws. Baring का मतलब to show. वो शो करता, he could have shown his white
fangs means teeth, and paws का मतलब फिर वही पंजा, यानी वो अपने दांत और पंजे उन घरों के सामने जाके गुर्रा के दिखा रहा है, टेरराइजिंग द विलेज। और उसके इस दहाड़ने से, इस दांत दिखाने से, इस पंजा दिखाने से शायद जो जंगल के लोग थे या जो विलेज के लोग थे वो डर जाते। So that was terrorizing the village. So this comes with the first. Again, this stanza talks about the forest. Now, after this, another stanza. This could be the first, second, third, fourth stanza. He is locked in a concrete cell. Now, again, this stanza talks about the zoo. अब ये stanza फिर बताता है कि टाइगर जो है वो कहाँ है, जू में है। तो वो लॉक्ड है, द टाइगर इज लॉक्ड। टाइगर क्या है, लॉक्ड है, कहां पे, कॉन्क्रीट सेल में, यानी एक जेल में बंद है जो कि पत्थर की है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है वो उसी जो है प्रिजन के अंदर बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, स्टॉकिंग अगेन वॉकिंग, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि जिस केज में बंद है उसको उसकी उसी केज में आगे पीछे या फिर एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है। तो ही स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, जितना लंबा केज है तो उतनी बार आप उधर जाता है फिर इधर आता है, राइट। ही स्टॉप्स द केज। इग्नोरिंग द विजिटर्स, अब फॉरेस्ट में होता, इफ ही कुड हैव बीन इन द फॉरेस्ट तो ही कुड हैव किल्ड द विजिटर्स, बट हियर ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, व्हाई, बिकॉज़ ही इज बिहाइंड बार्स। एंड नाउ वी विल कम टू द लास्ट स्टैंजा। ये फिर जू के बारे में बताता है कि he hears the last voice at night। आखिरी में जब जू में कई सारे अथॉरिटीज होते हैं तो रात में वो चेक करने के लिए आते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो प्रॉपर्ली अपने केज में है कि नहीं। तो he hears the last voice at night, तो वो जो आखिरी आवाज सुनता है वो उसी सायरन की सुनता है जो वो ऑफिसर्स बजाते हैं जब उन्हें लगता है कि सारे जानवर सेफ, राइट। द पेट्रोलिंग कार्स, ये पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, ऐसी कारें जो किसी पुलिस के द्वारा चलाई जाए और वो ये चेक करने के लिए आए कि सब कुछ सही है। तो पेट्रोलिंग कार्स का मतलब ये हुआ कि एनी कार व्हिच कम्स एंड चेक्स अबाउट एन एनिमल इन द केज, ठीक, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। अब टाइगर जो उनको चेक करने के लिए आई है, टाइगर को चेक करने के लिए आई है, उसी कार को अपनी ब्रिलियंट आईज से देखता है। टाइगर की आईज आर वेरी ब्रिलियंट, ओके। एंड देन एट द एंड एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो उसी आंखों से उस ब्रिलियंट कार्स को देखता है, ब्रिलियंट आई से उन कार्स को देखता है और उसी ब्रिलियंट आई से स्टार्स को भी देखता है। तो दिस पोएम बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ एनिमल्स आर केज्ड। एनिमल शुड नॉट बी केज्ड। Any animal, everybody has the freedom to talk, everybody has the freedom to move, so they should not be caged. So I hope you have understood this poem, and if you have any problem in this video you can re-watch the video many times and you can use earphones for better sound quality. Thank you children.